Good evening, students. Today we shall discuss about keyboard. Keyboard is the most important part of a computer. It consists of different sets of keys that help us to enter information into computer. तो इसके द्वारा हम ये सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, अलग अलग की सेट्स के द्वारा. ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़, 104 की होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर. टाइप्स ऑफ कीज़ इन ए कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज़ होती हैं? नंबर 1 अल्फ़ाबेट्स की, नंबर 2 नंबर कीज़, नंबर 3 स्पेशल कीज़, नंबर 4 फंक्शन की, नंबर 5 नेविगेशन कीज़. अल्फ़ाबेटिक्स की कितनी होती हैं? 26 होती हैं जी. अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट कीज़ आर प्रेजेंट ऑन ए कीबोर्ड फ्रॉम ए टू जेड. These keys are not present in the alphabetical order. These keys are used to type words, sentence or paragraph. Number keys. These keys are used for typing numbers. These keys are present above the top row of the alphabet keys and also present on the right side of the keyboard. ये है आपका कीबोर्ड का पिक्चर. ये देखो, ये इसमें दिया हुआ सारा, ठीक है ना. ये देखिए, ये ठीक है. इसमें शिफ्ट है, कंट्रोल की है, अल्टरनेट्स की है, कैप्स लॉक्स हैं, सभी कुछ ही तो है. स्पेशल कीज़ क्या होता है? कीबोर्ड हैज़ मोर स्पेशल कीज़ सच एज स्पेस बार की, स्पेशल की होता है स्पेस बार जो बोलते हैं. कैप्स लॉक्स है, बैक स्पेस है, स्पेशल शिफ्ट की है, एंटर की एंड सिंबल कीज़ एंड टैब की एक्सेट्रा. फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होता है फंक्शन कीज़. 12 फंक्शन कीज़ आर प्रेजेंट ऑन ए कीबोर्ड. दे कीप्स आर परफॉर्म specific keys so tasks. They are present on the topmost row of the keyboard. Label F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. These keys have different functions for different programs. Navigation key में every keyboard has some स्पेशल नेविगेशन कीज सच एज कर्सर, कंट्रोल कीज जैसे कि एरो की जिसको बोलते हैं, तो होम की, एंड की, अल्ट की, कंट्रोल की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट एक्सेट्रा. ये नेविगेशन की होती है, ठीक है. उसके बाद में है ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है. शॉर्ट हैंड के अंदर For the purpose of quick and easy writing, frequently occurring words are represented by small signs in shorthand called short forms. These can be divided into 3 categories: logogram, grammalogs and contractions. Logogram क्या है? A frequently occurring words, यानी बार बार आने वाला शब्द, represented by a small imaginary signs in the shorthand is called logogram. There are only 24 logograms formed by dots, dash, angular signs, circles, loops in English shorthand. English shorthand में सिर्फ 24 logograms हैं, जैसे कि A and B, all and etc. should. Grammalogs क्या होता है? A frequently occurring word represented by a single consonant. Okay. स्ट्रोक इन शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड ए ग्रामलोग, जो सिंगल कॉन्सोनेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि मान लो के से हम कैन रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हम गे से हम गिव या गिवन रिप्रेजेंट करते हैं, और एन से हम इन या एनी रिप्रेजेंट करते हैं, पुट पी से पुट. और कंट्रैक्शंस क्या है? ए फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more कॉन्सोनेंट
consonantal stroke is called a contractions. Simple contractions can be formed by joining disjoining strokes to grammar locks, जैसे कि income है, okay, being है, going है, because phrasing, right of two or more words or short forms without lifting the pen is called phrasing, जैसे कि to do, should be, tick at, the, tick the word the is frequently used in English and may be represented by a light slanting tick joined after a stroke or short form of words written in opposite direction of stroke as of the, to the, on the, at the. ये हैं आपके पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने फुल स्टॉप लगाना है शॉर्ट हैंड के अंदर तो क्रॉस लगाएंगे, कोमा लगाना है तो कोमा लगाएंगे, सेमी को लगाना है तो क्रॉस और नीचे कोमा लगाएंगे, ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद में है आपका हाउ टू यूज़ ए डिक्शनरी इफेक्टिवली। ए डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनीवन who is learning a new language. With a good dictionary you can do the following. Look up the meaning of an English word you see or hear. जब आप सुनते हो किसी शब्द को या देखते हो पढ़ते टाइम तो उसका आप मीनिंग जरूर देखें। फिर उसके बाद स्पेलिंग चेक करें, उसकी चेक द स्पेलिंग ए वर्ड। फिर उसके बाद चेक द प्लूरल ऑफ ए नाउन, पास्ट टेंस ऑफ ए वर्ब क्या होता है वो चेक करें। फाइंड आउट द अदर ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड, फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड, फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ ए वर्ड। टू बी ए गुड डिक्शनरी यूजर, however it is not enough to know what to use the dictionary, or you must also decide which is the best dictionary for any of the purposes listed above. As well as this, you need to be able to find what you are looking for quickly. You need to be sure that you have found what you were looking for, and most importantly you need to know when to use your dictionary. Finding words quickly, आप कैसे वर्ड ढूंढ सकते हो? This is a skill that you need to practice. Ask someone to write down 5 words and see how long it takes you to find them. Of course you will need to know the English alphabet perfectly, so practice this too. Use the guide words at the top of each dictionary page and keep practicing until you can find any word within 10 seconds. You should also practice finding words in your own language in your Bengal dictionary. Bengal means Hindi English dictionary. If you use an electronic dictionary, take some time at home to learn how it works, and again practice finding words quickly. Finding the right meaning of a English word. Very often when you look up a new English word, you find that it has more than one meaning. You are not sure which one is correct. Here's what you can do. First, check through all the meaning and find the one that makes most sense in the context where you find the word. Very often many of the different meanings are similar, and this
should be enough to give you a good idea what the words meaning. Okay. फिर है उसके बाद में सेकंड, इफ यू रियली वांट टू मेक श्योर थिंक व्हाट द वर्ड इज इन योर ओन लैंग्वेज एंड लुक इट अप in a Bengal dictionary. If one of the English translations is the original word you looked up, then you can be satisfied that you have find the right meaning, find the right spelling. Another problem you may have is when you want to check your spelling but you can not find the word you are looking for. What can you do? If you are sure that sure of the first few letters, just look down the page until you find the right spelling. Again, it is helpful to check the meaning. Meaning is the one you accept. If you are not sure of the first few letters, try some other possibilities. You know, for example, that some words that start with N and sound have K as their first letter. Example, knife, night. So if you cannot find the word under N, try looking in the K pages. If you still cannot find the words, think what is in your language and look it up. When you find a new word while reading, finish the sentence, better the paragraph. If you have not guessed the meaning and it still seems important, then you can look it up. To avoid interpreting your reading far too long, you should find its meaning in your own language using a Bengal dictionary. When you hear a new word in class or the teacher has written it on the blackboard, wait and continue listening. What the teacher says next may help you to understand the word. If you look in your dictionary, you will not hear what comes next, and this will make understanding the lesson more and more difficult. If you think the words is very important, you could copy it from the board or write how you think it is spelled. Then later you could ask the teacher or another student what it means. Thanks for watching video.